Assalamu alaikum to everyone, guys. Today we will start the new subject, surveying. As you know that we have been not there for uh, at least 2 years, so we are welcoming to all of you, and we will start a new subject today for the Jkpsc and J exams. So I am requesting you. We will discuss all of the complete details according to syllabus, and if you have any kind of doubt and if you don't understand anything, you can go through feedback through comments, or you can contact us in our telegram group or any whatsapp group or any other channel which I have provided. So let us start today the subject, that is surveying. The surveying that we will discuss today will be applicable to all of the exams of state level, whether that will be the PSC exams or JE exams or any SSC or RRB exams, but we will mainly focus on the Jkssb and Jkpsc exams, A level and J level. We will try to go through all of the concepts which you have studied or not have studied, and we will try to cover all the syllabus in it and all the concepts related to it. So let us start from the very basics, from the definition of the surveying. As you already know that the surveying is the, we define it as art and science, actually art and science of determining the relative positions of the objects, relative positions or position of objects. Those objects can be on the ground, above the ground and below the ground. So we will write as this: above, on and below the surface, above, on and below the surface of the earth, below the surface of the earth. So let us go through the word by word. Firstly, we say that it is the art. Firstly, we say that it is the art. When we say it is the art, what does that actually mean? In this, the skill of developing the map on practical grounds will be required. Practical grounds will be required. The experience that will be purely man-made experience, and that is related to our skill, and that is why it's called art. इसको आर्ट इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि आर्ट में हम ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम बोलते हैं मेरे पास एक आर्ट है। जब मैंने ज़िंदगी में कोई चीज़ देखी होती हैं या मैंने एक्सपीरियंस की होती हैं, उनको मैं अपने तरीके से बयानबाजी कर सकता हूँ। दैट इज़ रिलेटेड टू आर्ट। उसके बाद हमने बोला ये साइंस है, तो ये तो सिंपली आप बाय डेफिनेशन ही आप समझ सकते हो, क्योंकि जो भी हम मैथमेटिक्स करते हैं, मैथमेटिक्स होता है हमारे पास, हम इसमें लॉज ऑफ मैथमेटिक्स, लॉज ऑफ फिज़िक्स लगा के, जैसे हमारे पास हमारे ईडीएम्स में या जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास या इलेक्ट्रॉनिक होते हैं हमारे पास, उनमें हमारे पास ये जो लॉज ऑफ फिज़िक्स लागू होते हैं। और उसके बाद हमारे पास होते हैं हम बाय द यूज़ ऑफ दीज बोथ टू आर्ट एंड साइंस, by the use of both these art of science, what we can do, we can determine the relative positions of the objects. So here we use the word relative. You might have noted relative. It is not the relative elevations.
relative elevations. Relative elevations. We talk the relative elevations in different branch of the surveying, different subject of the surveying. That's called the leveling. That's called the leveling. You should not misunderstood or misrelated to this with the leveling concept. It is the relative positions. When we talk of the relative positions, we follow through the distances, both horizontal distances and the vertical distances. And we talk about the angle. We talk about the angles. There is a horizontal angle and the vertical angle. When we determine both distances x, y, z and determine the angle, then we can determine the position, the correct position, the absolute position of the object. Actually, the word relative is the more appropriate term, not the absolute. We can determine the relative positions of the object. Suppose we have an object on this ground, and we say in the definition that on the ground, you every day you know what you are using in the surveying, what type of surveying you are using in the ground, in the roads, in the buildings, for determining the property line, for determining the positions of the roads, alignment of the roads, alignment of the buildings, and different and so on. And also when we talk about the below surface, we have tunnel engineering. We have tunnel engineering. We have the survey used in making tunnels, whether those tunnels will be of for the surveyors, for the connectivity, like of railways and roads. I believe that you are making the notes what I said, what I not written. You are written in those particular things in your own words. And we say that above the ground, and above the ground, you know that what we are using, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम कौन सी सर्वे इस्तेमाल करते हैं. वी आर यूजिंग दी फोटोग्रामेटिक सर्वे हम इस्तेमाल करते हैं. और बहुत सी किस्म की सर्वेस हम जहाँ से हम डिफरेंट चीज़ों की एलिवेशंस, डिफरेंट चीज़ों की पोजीशंस हम डिटरमाइन करेंगे, सैटेलाइट वगैरह की. जहाँ पर हम वहाँ पे जीपीएस की बात करते हैं, सैटेलाइट्स की बात करते हैं, रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं, हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं. तो इट वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग. सो मुझे उम्मीद है कि आपने सर्वेइंग की डेफिनेशन समझी होगी. इसमें जो चीज़ें आती हैं आर्ट, इसमें जो ये वाली चीज़ आती है साइंस, और इसमें जो तीसरी चीज़ आती है दैट इज़ द रिलेटिव पोजीशंस. दिस नॉट द वर्ड रिलेटिव एलिवेशन, इज द रिलेटिव पोजीशंस. तो हमारे पास ये जो सर्वे होती हैं, सर्वे हमारे पास एक ऐसी साइंस है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी भी चीज़ की, चाहे वो बिलो ग्राउंड हो, ऑन द ग्राउंड हो, अबो ग्राउंड हो, उसका एक मैप बनाते हैं. उसको फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे लाते हैं. पहले उसको क्या करते हैं, तो डाटा कलेक्शन होती है हमारे पास. उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, उसका हम मैपिंग करते हैं. उसके बाद मैपिंग होती है हमारे पास दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. उसी मैप का एक मॉडल जैसा, एक उसका जो एक रियल मॉडलिस्टिक व्यू हम ग्राउंड में बनाते हैं. दैट इज़ व्हाट वी डू इन द सब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग. सो आई होप दैट यू माइट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग. तो आसान लफ्ज़ों में हमने बोला कि सर्वेइंग क्या होती है. तो सर्वेइंग में हम ये चीज़ें करते हैं. बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्वेइंग आते हैं. टाइप्स ऑफ सर्वेइंग हम जब बात करते हैं तो हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ सर्वेइंग में हम जब बात करते हैं, we have plain surveying and we have geodetic surveying. और प्लेन सर्वेइंग हम कैसे डिफाइन करते हैं और जियोडेटिक सर्वे हम कैसे करते हैं. आसान लफ्ज़ों में हम ये बोलते हैं कि we are saying in simpler terms that when the area that has to be surveyed is less than 250 किलोमीटर पर स्क्वायर on practical purposes, on practical basis, प्रैक्टिकली हम यही बात बोलते हैं. तो हमारे पास हम उस टाइम को प्लेन सर्वे
करते हैं, प्लेन सर्वे करते हैं। और अगर हमारे पास मोर देन 250 किलोमीटर पर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 250 किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया होता है जिसकी हमें सर्वे करनी है, उसका रेंज ग्रेटर दैन 250 किलोमीटर पर स्क्वायर है, तो हम इस्तेमाल करते हैं उस टाइम पे एक और ब्रांच सर्वे की जिसको हम बोलते हैं जियोडेटिक। होता क्या है ये प्लेन एंड जियोडेटिक? एक्चुअली द वर्ड प्लेन इज यूज्ड फॉर द व्हेन वी कंसिडर द lines on earth surface flat, that we say that all lines on the surface of earth are flat। दो पॉइंट्स को दरमियान जो जोड़ने वाली लाइन होती है वो फ्लैट हम उसको कंसिडर करते हैं। इसमें हम बोलते हैं कि जो हमारे पास रियलिस्टिक व्यू है कि जब हम दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो हम उसको एक आर्च के तरह, एक कर्व्ड लाइन की तरह हम उसको मानते हैं। तो उसी वाले सर्वे को बोलते हैं हम जियोडेटिक सर्वे। तो इसका मकसद ये है कि इसका यहाँ से हमें एक पॉइंट निकला, वो पॉइंट ये निकला कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि हम उसको यहाँ पे जो कर्व्ड नेचर है जहाँ हम इसको बोलते हैं कर्व्ड नेचर है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? नेगलेक्ट करते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है, चूँकि अर्थ का एक रियलिस्टिक व्यू है कि वो हमारे पास कर्व होती हैं, हमारे पास एक आर्च टाइप होती हैं, हमारे पास कर्व होती हैं, उसका वी आर टेकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू व्यू, टेकिंग टू कंसिडरेशन। आई बात आपको समझ में? तो हमने क्या बोला, सिंपली हमने बोला यहाँ पर हम कर्वेचर इफेक्ट को क्या करते हैं, कर्वेचर इफेक्ट को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम कर्वेचर इफेक्ट को हम क्या करते हैं, कर्वेचर इफेक्ट को हम नेगलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? नेगलेक्ट। तो ये हमारी बात यहाँ से निकली। तो जब हम यहाँ पे कर्वेचर इफेक्ट को कंसिडर करेंगे, किसमें, एक्चुअली मैंने ये गलत लिखा, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं और प्लेन सर्वे में हम नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे कर्वेचर इफेक्ट को कंसिडर करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं यहाँ पे प्लेन सर्वे में, इसका मतलब यही होता है कि हम अर्थ सरफेस को फ्लैट मानते हैं, है ना। तो जब हम अर्थ सरफेस को फ्लैट मानते हैं तो अगर हम प्लम लाइन्स बनाएंगे, यानी कि मैं एक 90 डिग्री एंगल पे यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रा करूँगा, प्लम लाइन्स ड्रा करूँगा, तो ये दो प्लम लाइन्स आपस में पैरेलल होगी। ये दो प्लम लाइन्स आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन जो ही मैं अपने रियलिस्टिक व्यू में जाऊँगा, अपने अर्थ के सरफेस पे जाऊँगा, जहाँ पे मैं दो प्लम लाइन्स को बनाऊँगा, आप देख सकते हो ये दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द अर्थ सेंटर। ये सेंटर की तरह कन्वर्ज करने को दिख रही है, आप देख सकते हो कि दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स सेंटर। दैट मीन्स इफ वी आर ड्राइंग द लाइन्स ऑन द plane survey, whenever we draw the lines on this surface of earth, those lines are parallel to each other, and whenever we draw the two lines or plumb lines at the in the geodetic survey, those lines seems that they are apparently meeting at a point, that point is called the earth's surface। तो यहाँ पे दो प्लम लाइन्स आपको पैरेलल दिख रही हैं, और यहाँ पर आपको दो प्लम लाइन्स आपको दिख रही हैं कि वो एक कॉमन पॉइंट पे टच करती हुई, मीट करती हुई दिख रही है। तो ये एक और डेफिनेशन है, ये एक और यहाँ पे एक डिफरेंस है। उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास ये है कि हम देखते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन सर्वे, जब हम प्लेन सर्वे की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग प्लेन सर्वे और प्लेन सर्वेइंग, व्हेन वी आर, चूँकि हमारी हर कोई लाइन स्ट्रेट होती हैं, तो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो वो ट्रायंगल भी क्या होगा, वो ट्रायंगल भी हमारे पास एक परफेक्ट ट्रायंगल होगा व्हेन वी कंसिडरिंग द साइड्स ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर ट्रायंगल, तो जब हम इस ट्रायंगल बनाएंगे तो ये
पहले तो ये सारी क्या वाली, ये सारी जो ये लाइन्स होगी ये स्ट्रेट होगी, है ना। तो जो ही हम इसको हम किस में बनाएंगे, जो ही हम इसमें बनाएंगे, यही वाला ट्रायंगल हम बनाएंगे किसमें, अपने रियलिस्टिक व्यू में, ज्योमेट्रिक सर्वे में। तो ये लाइन्स हमारे पास दिखेगी, ये क्या है, ये इनमें कर्वेचर इफेक्ट भी आएगा। तो जब हम इस ट्रायंगल का क्या करते हैं, सम ऑफ एंगल्स निकालते हैं। सपोज ये ए है हमारे पास, ये बी है हमारे पास और ये सी है हमारे पास। तो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ एंगल्स ए प्लस एंगल बी प्लस सी, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली 180 डिग्री का आता है। और यही सेम बात हमारे पास जब हम कहाँ पे करते हैं, यही सेम बात हम अपने इस जियोडेटिक ट्रायंगल की बात जब करते हैं, तो हम जब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करते हैं, हमारे पास ये 180 डिग्री नहीं आता। दिस सम इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, दिस सम इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब ये हमारे पास ये सम 180 डिग्री आता ही नहीं, तो किसके बरक्स आता है, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास ये आता है, सपोज करो ये हमारे पास आता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस डेल्टा। ये जो डेल्टा है हमारे पास, इसी को हम बोलते हैं इन आवर लैंग्वेज, इन दिस सर्वेइंग लैंग्वेज, इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस वी से दैट दिस डेल्टा इज कॉल्ड द spherical axis. This is called a spherical axis. So we use the word here spherical that because this is related to our curvature. This is related to our curvature, and this axis, there is an in excess quantity. This is above quantity in excess to 180 degree. That is called the spherical axis. तो हमारे पास ये spherical axis आती है। तो हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ से ये बात बोलते हैं कि जब हमारे पास जो होता है कि जो ट्रायंगल के एंगल्स का सम आता है हमारे पास ज्योमेट्रिक सर्वे में, और जो हमारे पास प्लेन सर्वे के ट्रायंगल में आता है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एक्सेस। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एक्सेस। और यही जो स्फेरिकल एक्सेस होता है ना, यही जो स्फेरिकल एक्सेस होता है, ये 1 सेकंड के करीब आता है। किस 1 सेकंड के करीब आता है ये स्फेरिकल एक्सेस, चूँकि ये एंगल में एक्सेस है, तो इसलिए हम या तो डिग्री में मापेंगे, या तो सेकंड्स में मापेंगे, या तो किस में मापेंगे, मिनट्स में। तो ये 1 सेकंड के करीब आता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, सो यू मस्ट फोकस हियर दैट ये 1 सेकंड के बराबर तब आता है जब हमारे पास क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये 18.5 किलोमीटर या 18.2 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। और मोर प्रीसाइजली व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, वी से दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीसाइज वैल्यू की बात करेंगे, तो जब हम बात करते हैं ना, हमारे एरिया 195.5 और 196 या 190। सो व्हाट आई वाज सेइंग एक्चुअली दैट टू बी प्रीसाइज द एरिया ऑफ 195.5 किलोमीटर्स for this very particular area, the spherical axis of 1 second become so it becomes to be shown. That means it becomes what I can say that it becomes prominent actually at that time, the 1 second, or you can say that when the area to be survived is 195.5 kilometer per square, the spherical axis is at that time 1 second, and that was the spherical axis actually. So in precise, it has been asked in GATE exam. In one question they have given the area, what should be the area for the geodetic survey, and many students were confused that the area is not given as 250 kilometer per square as we say that generally the area for the geodetic survey should be greater than 250. So at that time there was no option of 250 kilometers square given. At that time the option was 195.5. So it's actually the precise or the actual area at which the spherical axis become 1 second. So it should be clear now from onwards. It should be clear to you. And another difference between the two is that in case of plane surveying, as we say, this is used for less work
or where the curvature is neglected. As curvature is neglected, so the results are not actual. So we can say that it is not that accurate. It is not that accurate as this is accurate. It is much more accurate for bigger projects. So far it is used, this plane survey is used for our day-to-day surveying. Like it is used for the roads and railways. Because they it is used for the roads and railways. And for another, like if we have to do the alignment of our building or commercial building, or we can say as our residential building or our house, that time we neglect the curvature effect, because the distances are not very too long. And in case of the geodetic survey, these are used for bigger projects. These are used for to obtain the control points. Those control points are actually the permanent match marks that we use for our this very particular surveying. So those control points, that means it is used by the survey of India. Survey of India uses this very particular to obtain the control points, or to obtain the location of their control points. They use this type of very particular survey. That means they don't disagree, they don't neglect the curvature effect in case of this very particular to obtain the control points. But as far as this is concerned, when we use then temporary match marks to obtain or we use in case of fly leveling, when we have to obtain the benchmark from the reference of original permanent benchmarks. At that time the survey used for this type of particular things is plane survey. This may not be clear this time for you, because we have not studied the another subtopics of survey. We are at the basic level today. So it was all about, I think so, that these were the major differences. There are some minor differences also, but those become clear by name itself. And those are not that very particular which are asked in your exams. So it should be now clear to you. What I say between the differences between the plane surveying and the geodetic survey. As far as the plane surveying is concerned, the apparatus, the instruments used are not so sophisticated. They are using we are using the level. We are using the suppose we are using the plane table. Suppose we are using the chain. We are using metal. We are not using the idioms. Here we are using the sophisticated things, idioms, electronic distance measurement things, or we are using total station, etc. We are using in this, because the control pointers should be accurate and precise. They should not be up to and beyond the optimal error or the limit. So it was another difference between the two. And there was another thing which I was about to discuss with you. What was that actually? I don't remember at this time. What was that point actually? So this was the differences between the two types of surveying. This type of survey we usually use for many time period. What we were using the method of triangulation. Triangulation. This was the very much particular method, because in this triangulation the simplest figure to be made was the triangle, and the distance were measured by using the angles between the lines. So it was the method which we were using, and there was the three things which we had to be made. There was the primary control points,
primary control points, then secondary control points or secondary control points, and there was a tertiary what we use in our daily to day life. And this was the primary control. It was the distance was approximately between 15 to 25 kilometers, between 15 to 20 each side are greater. In this way, this is less than the 15, this is less than 15 kilometer distance. And for this one, this is tertiary type of, this is less than 5 kilometer, this is less than 5 kilometer. So these were the main things which we do in the geodetic survey, and these are the actually the triangulation method. And for the triangulation method, we have to obtain the primary control pointers. These are the main pointers, and the secondary control pointers are the secondary triangular or secondary shapes, which is between the bigger area or main control points. Then we have tertiary, which is the subset of the secondary one. So it should be now clear to you that what is surveying actually, and what are the differences between plane surveying and geodetic surveying, and what time particular project we should use the plane survey, and for what type of things, for what type of projects we should use the geodetic survey. Then after that we have a very important question here. The one question what I previously discussed was the gate question, which was asked in gate. Now I am discussing the another aspects and another things which were asked in many A and G exams, and they are asked again and again. What we already say that if this is a particular, we have draw a line on the Earth's surface. This is in the realistic view. In the geodetic survey, this is actually the arch type. This is actually the curvature of this is actual line. And when we draw the chord between the same two pointers, and if this is the r is the radius of the earth, then the difference, where the common question asked is, what is the difference between this type of length and this type of length? It has been asked in many exams, and it has been seen that the difference between this, if this distance is s and this is c, this chord length, and this is the arc or arch distance, then this s minus c is equal to, when we use the approximation method and we use the basic theta is equal to arc by radius, then we use the we go for the sine theta by 2, and we are using the approximation that we use in the mathematics. The formula comes, the difference between s minus c comes out to be s cube divided by 24 r square. So it can be shown that the difference between the two lengths s minus c is directly proportional to s cube or curvature cube. So it's a very important thing to be keep in mind. And when the length like that of 18.2 kilometer was put in this very particular formula, and the radius was put at 6370 kilometer, which is the radius of the earth, the difference was seen approximately at 6 point something mm. So in many books you can see that they have given the difference as s minus c is equal to 10 mm, but that 10 mm is used for the 18.5 kilometer. That is used for the 18.5 kilometer. So it is more than that of 18.2. So they have used the 10 mm for the 18.5. So if the distance the question was asked like that, if the distance is 54 kilometer, what is the difference between the arc length or arch distance or geodetic distance and plane surveying or plane distance? What is the difference between the arch distance and the chord distance? So simply it was 3 times the what we have used, that is 18. So for 18 kilometer, we say 8 3 is 24, 3 is 3 was 3, and that becomes 54. So it is not equal to, it should be remembered that it should be
in your concept now, from now towards on, that it is not equal to 3 into 10 mm, it is not equal to 30 mm, it is not equal to 30 mm. It's actually s minus c, as I already said, it is directly proportional to arch length cube. It is proportional to what was that length. Actually it should be, as it is 3 times increased, it has 3 times increased, the length has been already increased by 3 times, so it should be proportionate as 3 cube, that is 27 mm. 27 mm. So actual answer is not 30 mm, the actual answer is 27 mm. The actual answer is 27 mm. So now I think it should be now clear to you, to everyone, to everybody, so that it should be remembered, and it should be now, you should be able to calculate, you should be able to give the correct answer to every question which will be asked onwards from this. So I think it is sufficient for today's class. So what we discuss in today's class, हमने क्या सीखा आज पहले क्लास में? हमने पहले सीखा कि सर्वेइंग क्या होती है, सर्वेइंग क्या होती है। हमने पहले देखा सर्वेइंग एक आर्ट है, साइंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम पॉइंट्स की जो रिलेटिव पोजीशंस है, पॉइंट्स की जो रिलेटिव पोजीशंस होती हैं, चाहे वो ग्राउंड के ऊपर हो, ग्राउंड के नीचे हो, या ग्राउंड के अंदर हो, या ग्राउंड के ऊपर हो, उनकी रिलेटिव पोजीशंस को हम डिटरमाइन करके उनका एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। और उस एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए हम तो उसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, और उसके लिए हमें थीटा भी चाहिए, उसके लिए हमें थीटा भी चाहिए। जब हमें ये चीज़ें नून होगी तो तब हम उसकी एक लोकेशन, एक रिलेटिव लोकेशन को दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने मेनली देखा कि क्या हमारे पास क्या डिफरेंसेस होती हैं हमारी प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में। जियोडेटिक सर्वे में सबसे बड़ी बात हमने ये बोली कि हम इसमें कर्वेचर इफेक्टों को नेग्लेक्ट करते हैं, और इसमें हम कर्वेचर इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा एरिया होता है जिसमें हमारे पास एक एरर्स जो प्रोमिनेंट होते हैं अगर हम कर्वेचर को नेग्लेक्ट करेंगे। इसलिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब भी 250 किलोमीटर पर स्क्वायर प्रैक्टिकली देखा गया है ये कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो तब जाके उनमें डिफरेंसेस आ जाती हैं, प्रैक्टिकली ये देखा गया, तो इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। 250 किलोमीटर पर सेकेंड इज प्रैक्टिकल थिंग, एंड what I has previously discussed 195.5 kilometer per square is that it is a precise thing. At this particular thing, actually the spherical axis becomes 1 second. Actually. So these were the first differences between the two types of serving. After that, I have discussed that this is used for the precise work. It is not used for the precise work. This is used for the less important works. This is used for the day-to-day surveying. It is used for to obtain the main control points, for to establish the secondary things which is used in the plane surveying. And one more thing which I have discussed between the two is that whatever we made here, that is a perfectly triangular. But in case of these things, if we have to made the triangle, this actually becomes our spherical triangle. This actually becomes a spherical triangle, and the angles, the sum of angles is not 180 degree, it is 180 degree plus something. That something was called the spherical axis. That was called the spherical axis, and I say that the spherical axis is approximately here 1 second, and that 1 second becomes actually prominent and becomes when the area to be surveyed is 195.5 kilometer per square. When we say the precise, when we talk about the precise things, so I think it should be now, it will be now enough. It was enough for today, and it will be now understandable to everyone. So अगर किसी के मन में कोई डाउट रहा हो, या किसी को समझ नहीं आया हो, या कोई भी हमारे लिए कोई भी आपको क्या बोलते हो, हम कोई भी सजेशन हो, वो सजेशन आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने जो रिलेटिव से, जो भी इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहा है उसके लिए उसको शेयर करिएगा। और कमेंट अगर आपको लगता है कि सही है, लेक्चर सही है, आपने कुछ सीखा यहाँ से, तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें आप, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो इट वाज थैंक्स टुडे। सो अल्लाह हाफिज़।